Hello everyone. In this video we will be discussing about the operators. ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन में, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो यदि मैं ऑपरेटर को डिफाइन करता हूँ, इफ आई डिफाइन द ऑपरेटर, बेसिकली ऑपरेटर द सिंबल परफॉर्म certain operations. There are following type of operators that is provided by the Python. One is arithmetic operators. Second one is relational or comparison operator. Third one is logical operators. One is wise operator. Fifth one, assignment operator. The last one is spatial operators. So let me start one by one here. So in this video, we will be discuss about the arithmetic operator first. Okay. So let me start with the arithmetic operator. तो आपने देखा होगा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो वही कुछ कॉमन ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, दैट इज योर एडिशन, that is a plus operator. Next one is subtraction, that is minus operator. Multiplication is asterisk. Division is slash. Now below operator, one is, that is important to understand, which is introduced by the Python, floor division operator. It is represented by the double symbol. Next, one important operator, that is the exponent or power operator. It is represented by the double asterisk. तो हम ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं वन बाय वन इन टर्म्स ऑफ द कोड देखते हैं। लेट मी टेक टू वैल्यूज हियर। सपोज a is equal to 5 and to 6, that I print addition is a plus b. That I copy and paste this code. Now write here the subtraction. Is a minus b. And I print the value of multiplication. That is
A into B. We are having division, that is A divided by B. तो फर्स्ट वी चेक दीज फोर बेसिक्स जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, और मैं इसका कोड रन करता हूं। तो आप देखिए, जब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करते हैं, 6 + 5 दैट इज 11, देन -1 30, एंड यू आर हैविंग द डिवीजन वैल्यू। अब जो मैंने आपसे बोला है कि पाइथन ने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो हैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करे हैं, उसमें से एक आपका जो ऑपरेटर है वो कौन सा है? आपका फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। और at first we see the modulo operator, then we will move for the floor division. So modulo operator, what is it? Suppose I'm just doing A mod B. You can see the output is 5. When I divide the 6, when I divide the 5 by 6, you are getting the 5. What does it mean? ये आपके सामने रिमाइंडर प्रिंट कर रहा है, भाई यदि 5 को 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू बचने वाली है। तो वो वैल्यू जो आपकी बचती है वो 5 बच रही है, जो आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको रिटर्न कर रहा है। अनदर काइंड ऑफ ऑपरेटर जो कि इम्पॉर्टेंट है दोनों, वो है आपके फ्लोर डिवीजन एंड पावर ऑपरेटर या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। देखिए, यदि मैं फ्लोर डिवीजन करता हूँ, that is A divided by /b. When I run this code, can you see the output is 0? Okay. So खैर देखिए, हम इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए लेट आई चेंज द वैल्यूज हियर। When I run this code, so you can see the output is 1। मतलब जब मैं 6 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर जो है आपका एक इंटीजर वैल्यू मुझे रिटर्न कर रहा है। लेकिन एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन और समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है। यदि मैं इसी को फॉर एग्जांपल लेट आई टेक टू वैल्यूज, a is equal to 4 and I take b is equal to 2. When I run the similar code here, let I print the value of a floor division operation, you can see the output is 2. So when you are giving the integer value, the floor division operator is returning you the integer value only. But if any one value of your numerator and denominator in the float division, if it is a float value, when you run this code, so you will be finding a float value. ये इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा उसका, लेकिन यदि आपने फ्लोट वैल्यू एक भी प्लेस पर दे दी है, तो उसको फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में ही आपको वो डेटा रिटर्न करेगा फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ध्यान रखने वाला है। इफ एनी वैल्यू float, then answer would be float. Another kind of operator which is in the category of the arithmetic operator is power operator or exponential operator. So let me take it. You run this code, so you are having the 6 power 5, जो कि आउटपुट आपके पास आ रहा है 7776। So it was all about the basics of the operator. What do you mean by the operator? And we have discussed about the one type of operator, that is the arithmetic operator. So for this video, it's all from my side. Thank you.